make fire text animation. In this video, you are going to learn how to make your text attractive and good looking. So, first go to titles option and import any title to your timeline. टाइमलाइन में हमें इंपोर्ट करना है. उसके बाद क्लिक करना है एडिट पे. क्लिक ऑन एडिट. नाउ यू कैन पुट योर टाइटल हियर. आप यहाँ से कोई भी टाइटल लिख सकते हैं. जिससे मैं लिख रहा हूँ प्रॉक्साइड्स. Now select anyone any from here. यहाँ से कोई भी सेलेक्ट करना है. मैं ये कर लेता हूँ. और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है फायर. From here you have to select fire. And click on border. And you can select here border. I'm using green color. मैं यहाँ green color यूज कर रहा हूँ. Now click on OK. मैं यहाँ to go to fill shadow. Fill shadow पे क्लिक करना है हमें. और डिस्टेंस इसका बढ़ा देना है. इसको हटा के we have to select anyone. And decrease the distance. हमें जाना है advanced. Now we have to go to advanced option. Now from here you can do many changes like opacity, border, shadow, reflection, backdrop, animation and many more. Use reflection option. हमें reflection पे क्लिक करना है जिससे में टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन आने लगेगा. Always make the distance 5 or 2. Now here you can also select opacity for a reflection. I am making 90%. 90% यूज कर रहा हूँ. Now go to animation and here you can select your animation for your text. यहाँ से आप कोई भी चूज कर सकते हैं. fire, then your animation will be not enabled. अगर आप fire click on yes. Now go to OK. Click on OK option. I am making full screen. मैं आपको दिखाने के लिए फुल स्क्रीन करता हूँ. अभी फायर टेक्स्ट एनिमेशन लगा नहीं है. हम फिर से आते हैं एडिट ऑप्शन पे. go to special effects. From here select fire.
if you will select fire, then your animation will be not enabled. अगर आप सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन तो आपका एनिमेशन इनेबल नहीं होगा। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। Now here you can see our fire effect is enabled. Now thanks for watching and subscribe to Rockside.